सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 2 अप्रैल और सुबह के बज रहे हैं 10:15। तो अगर मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं तो मैंने कल बूटस्ट्रैप को बेसिक लेवल पे कंप्लीट किया है। और अभी मैं मुझे इतना बूटस्ट्रैप आता है कि मैं प्रोजेक्ट बनाने लायक हो चुका हूँ। डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह उन सब का हेल्प लेके आई एम एबल टू काइंड ऑफ वर्क ऑन प्रोजेक्ट। सो इसलिए राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ब्लिंकिट क्लोन, जो कि मेरा आकिया जॉब के मॉड्यूल में भी है। सो आई एम डूइंग दैट। सो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो जो मैं कह रहा था एक्यो जॉब का मॉड्यूल, मतलब मैं फिर से बता देता हूँ। मैं एक्यो जॉब में मैंने कोर्स ले रखा है, तो वहाँ से मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। सो वहीं से मतलब जो है ये ब्लिंकिट क्लोन करा रहा है। एक्चुअली कोर्स में जो है सिर्फ एक ही करा रखा है, मतलब एक ही क्लोन बना रखा है, दैट इज ब्लिंकिट। बट मुझे प्रैक्टिस के लिए दो चार और बनाने होंगे, तभी थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से बैठेगा। सो इसलिए मैंने सोचा इसके बाद मैं और दो तीन क्लोन्स और बनाऊंगा। मतलब बेसिक एच टी एम एल सी एस एस को इस्तेमाल करके, एच टी एम एल सी एस एस एंड बूटस्ट्रैप। जैसे कि नेटफ्लिक्स का क्लोन हो गया, स्पॉटिफाई का क्लोन हो गया, ये सब मैंने सोचा है। लेट्स सी। आज का एजेंडा है कि ब्लिंकिट क्लोन को अच्छे से कंप्लीट करें एंड थोड़ा बहुत प्रीवियस कंसेप्ट्स को और अच्छे से रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग करूँ। दैट्स इट। सो बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सुबह भी थोड़ा सा पढ़ाई की है, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट का स्पीड भी अच्छा है। सो अभी तक देखिए इतना बन चुका है। सॉरी, ये तो असली वेबसाइट हो गया। ये रहा मेरा वेबसाइट। अभी तक इतना बना है, बिल्कुल शुरुआती फेज में है। और इसमें बेसिक बूटस्ट्रैप लगाया है, तो मॉडिफिकेशंस वगैरह सब कुछ करना होगा। एंड या सो लेट्स स्टार्ट। So till now, this is my website that I have like made, and here I can see that I need to apply few borders as well. So let me see. Okay, yeah. So here, like we are applying the border at the bottom, right? So let me look at the documentation one to be confirmed. So yeah, here is the border. So if you want to add border, you're just gonna write border bottom, and that's gonna add a border, right? So let me add a border here. Border bottom. You can also like specify the width as well, but right now I don't think it's required. So yeah, that's pretty much it. Yeah. Once we have added the border, There can be in any sequence. Okay, you can add it in any sequence. No sequence, guys, no sequence. मेरे को जो जो याद आया मैंने अभी तक वो ही तो डाला है. Have I added anything more? No, right? So that is how it works. Okay. Also, let's add a padding a little bit, maybe. Yeah, no, but it's fine. Okay, let's leave it. Cool. So the next thing is that we have a vertical line here, right? So what I'll do is, so this vertical line will be designed using CSS. And so then second thing is that I need to add a vertical line after blanket. So this could be done using simple CSS. So how do I do that? First of all, I need to add an index.css file. And why is this? Oh, sorry. ओके, तो इसको लिंक भी करना पड़ेगा ना। तो हैश वर्टिकल लाइन
यार गर्मी हो गई, जैकेट खोल देते हैं। ये दिव है, सो हाइट दूंगा मैं 70 पिक्सल्स का, एंड let's see what he's doing. And what I'm going to do is I'm going to first give it a height. Okay, so let's give it a height of 50 pixels. And now let's give it a border right of 1 pixel, solid gray. Yes, you just need to display flex, you can see. So no, I can also write FW. एक बार देख लेता हूँ अच्छे से लाइव स्ट्रीम हो रहा है या नहीं। हाँ जी, हो रहा है। ठीक है, तो हम थे इसमें, राइट? पता है ये बॉर्डर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट नहीं है। एक बार अगर आप कंटेंट दे दोगे तो हो जाएगा। Now the thing is, I mean, did the CSS even apply? I think now the CSS should apply. And if I erase this content, then this is the border, right? I don't need borders on both the sides. So what I'm gonna do is border right. So this is I need to select a little bit, एक लाइटर कलर शेड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ठीक है? अब देखते हैं। चलो इतना ठीक है। 70 पिक्सल का हमने हाइट दिया है। Not sure if this is the exact here. Let's just take a lighter color, right? And if you notice that, you can see that this is the exact line that we wanted, right? I can increase its height a little bit, maybe 60 pixels, 70 pixels. Yeah, now it's perfect, and you can see that I've created the line as well, which I wanted, right? Perfect. Yes, I know. You will say, sir, the line is too far away from the blanket logo. It should be much closer, etc., etc. Everything will come into its place. You just need to be patient. Yes, Shashwat. Okay. Here, try to make a habit of writing things in the chat, because I, as an instructor, am allowing you to unmute during the live class, but not every other instructor. Tell me. Shashwat, बताओ. Take responsibility. Okay, let's move ahead. Let's pick this part. So now, देखो बहुत simple है ये. First of all, there is some kind of padding or some margin here that I can see. So first thing that I will do is just remove any padding or any margin that it has. So it does not have any padding. I think it has some margin. Yes, so it did have some margin, as you can see, right? Similarly, this particular element also has some kind of a
margin. So this is a margin that is coming up by default using Bootstrap, right? So I removed it as well, and you can see that as soon as I did it, you can see that it looks absolutely similar, right? If I wanted to make it much bold, I can also write FW bolder, and you can see that it has become bolder, right? This looks fine only. I don't think so I should change it, right? Yes, everyone? I don't think so I should change anything here. Cool. Acha, अब now I need to add the icons. There is no मतलब लाइक एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ये डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स है, आप पैडिंग, बॉर्डर ये सब हटा रहे हो, आई डोंट थिंक दैट रियली benefits much. I feel like that. I don't know, but तो फिर भी देख लेते हैं, चलिए कर लेते हैं। बॉडी बॉडी के अंदर है हमारा नैफ बार, नैफ बार के अंदर है हमारा ये वाला डिव, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स। इसको अगर मैं हटा दूँ तो क्या होगा? ऐसे ये वाला जो चीज़ है ये अलाइन नहीं हुआ है, राइट? हो गया है, हो गया, चलो ठीक है। क्लास मार्जिन 0, इसमें भी क्लास दो, मार्जिन रिमूव कर रहा हूँ। इनबिल्ट जो बूटस्ट्रैप देता है ना मार्जिन, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो ये रहा मेरा डिव और इसमें मैंने लगाया है मार्जिन 0, ठीक है? आप देखो, मैं जैसे इसको हटा दूंगा तो ये लो, एक इनबिल्ट you got a margin, right? Similarly, when you select this as well, it has, you have done this, right? Margin 0. So you can see this, that it added an inbuilt margin which is then removed again. तो हमने जो है मार्जिन को कर दिया है रिमूव। एक चीज़ मेरे को देखना है, मतलब अगर मैं इस H5 को देखता हूँ, ओके, इसके पास पैडिंग भी नहीं है, बॉर्डर भी नहीं है और मार्जिन भी नहीं, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं इस पैराग्राफ को देखता हूँ, इसके पास सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है एंड देन पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर कुछ नहीं है। एंड राइट नाउ दिस div seems to be center aligned, राइट? लाइक अगर आप देखोगे तो सारा का सारा जो है सेंटर अलाइंड लग रहा है। लेट मी शो यू, हैव अ लुक एट दिस। नाउ इट सीम्स प्रॉपर्ली सेंटर अलाइंड। अब मुझे जो है इसको बोल्ड बनाना है, डिलीवरी इन 8 मिनट्स, ताकि ब्लिंकिट वाला ऐसा लगे। तो इसको बनाने के लिए एक बार मैं फॉन्ट वेट लिख देता हूँ, क्या होता है। फॉन्ट वेट्स एंड इटैलिक्स, ये रखा। बोल्ड टेक्स्ट, तो आप डिफरेंट बोल्ड टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। सो मैं दूंगा FW बोल्डर, FW बोल्डर दे के देखता हूँ कैसा होता है। ये बोल्डर, so you can see that it seems pretty similar.
ये ज़्यादा बोल्ड लग रहा है क्या? हाँ, ये ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को। चलो और दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है। We cannot delay it anymore, right? So let's just start adding the icons now. Okay. So in order to add the icon, I told you that we'll be using font awesome. Now, oh, matlab cool. So I should change anything here? Cool. Acha, up now I need to add the icons. There is no, matlab, we cannot delay it anymore, right? So let's just start adding the icons now. Okay. So in order to add the icon, I told you that we'll be using font awesome. Okay, so font awesome is also a framework only or a library you can understand, right? So all the frameworks or libraries, okay, if you understand, is basically working with a CDN, right? So what I I'll do is I'll just simply Google font awesome CDN. I'll go to this website. So this is one of the best sites to get content delivery network links for such frameworks. I'll simply I'll just show again. Font awesome CDN. Search karo. Open the first site. Copy the first link, and where you're going to paste it. You're going to paste it in the head tab. Okay. Cool. So far so good. Very easy. सीढ़ियाँ हमने दे दिया। Simply, I will tell you once again. Search for font awesome CDN. Go to the first website. Copy the first link. Add it in the head tag. Now that you have done that, now it's time to add or use the icons. Okay, so here you need to go to fontawesome.com/icons, and here you can just simply start writing icons. So I want this icon, everyone. What should I search for? Batao. Any guesses? Down arrow. So one says down arrow. See about that. Down arrow. So if you search for down arrow, first of all, you click on the free filter because obviously this is works on a premium model. And yes, I think sort down or carrot down, or either one of them will be helping us, create this or add this icon. So you can see that this is the icon that we want, right? And what I need to do it in order to use this icon, I need to copy this link, and basically I need to copy this code, right? I will copy this code and I'll paste it here. And let me show you the magic. And you can see that the icon is now added. See, it's that easy. What did I do? The first step was act.
add the font awesome CDN. Second step was go to the fontawesome.com/icons website, search for the icon and then copy and paste it. Easy, right? Now the next icon, oops. Now the next icon is the search icon. So again, I'll go to fontawesome.com. Click on search. Okay, and you can see that I got this icon, and I think this is the most relevant icon that I can find, and I'll just simply copy it and I'll paste it here. And if we check the output, you can see that this icon looks absolutely stunning. Now we need a cart icon. Now finding the exact cart icon is difficult. If you want the exact cart icon, what you will do? You will find it somewhere in the inspector. But currently we just need to make a clone. So this icon would also be suffice. And I will copy this. And you can see the drop down, the search, and the my cart icon is also added. Right? Perfect. Have we successfully added all the icons that we wanted? चलिए एक बार आइकन्स को ऐड कर लेते हैं तो और दूसरा है कार्ट कार्ट सपोर्ट ये मुझे लगता तो क्या है ये इनलाइन एलिमेंट्स है जो आई टैग है ना दीज आर इनलाइन एलिमेंट्स हो गया Cool. And you can see that our website is that our number is starting to look a lot similar and exactly what we wanted it to look like, right? So the next piece that we need to now create is the search bar, right? Let's create the search bar now. Okay. अब search bar के लिए ना I'll be using a tool. Okay. What tool am I talking about? So first of all, this is the search bar, right? So the tool that I'm talking about is nothing but a color picker extension. Okay, so this is a Chrome extension, and if anybody wants to download, it is called color picker. Using this color picker, first I'll try to understand what is the let's refresh. What is the border color? So the border color that they are using is this, right? So what I'm going to do is I'm going to write border 1 pixel. ये बड़ा अच्छा चीज दिखाया इसने कलर पिकर नाम की एक है जो कलर को पिक करता है लेट्स सी कलर पिकर वाह इसको ना मैं एक्सटेंशन बनाता हूँ have a look like you can pick any color at any moment wow
Isn't that amazing? awesome. और इसको अगर बंद करना हो बस दोबारा क्लिक कर दो, बस ठीक हो गया फिर। सही चीज है ना? चलो खैर। Solid. This. And let's give it a border radius of 8 pixels, 10 pixels. Okay. And if you notice that 10 pixels of border has been added here, right? And I also give it a padding of 10 pixels. Okay, 10 pixels is too much. Let's give it 3 pixels and 5 pixels. Right? I think 3 pixels is a good number, right? 3 and 5, 3 in the y-axis, 5 in the x-axis. Right? Cool. This looks well. Let's give it a width now. Let's give it a width of 45%. Too big or too small? Too big. Little big. I think 40% would be enough. पता है, जैसे मुझे ये कलर को पिक करना है, ये कलर को और थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, ये क्या है? आप ऐसे कॉपी मार सकते हो और इसको बंद कर दो अभी के लिए। ओए होए, मैं बंद करना चाहता हूँ। बंद हो गया, ठीक है। अब जो है मुझे ये सर्च बार को ऐड करना है। बॉर्डर 1 पिक्सल solid hash e। let's see। जी, ये बड़ा ही हल्का सा आपको दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा होगा यूट्यूब के उसमें, क्या पता जूम करोगे तो दिखेगा। सी, बहुत ही लाइट सा कलर है ये, ठीक है। इसमें आप बेसिक मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकते हो जैसा सर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल हियर पर इज डूइंग इज पैडिंग दे रहा है वो 3 पिक्सल एंड 5 पिक्सल का, एंड ऑल दोस। Cool. This looks well. Let's give it a बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। width now. देख लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, पैडिंग ऊपर नीचे 3 पिक्सल और लेफ्ट राइट 5 पिक्सल। नाउ यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग। हैव अ लुक। लग रहा है ना ठीक? पता है क्या, ये आप रेप्लिकेट कर सकते हो यहाँ से भी। आप देखो यहाँ पे भी सेम चीज है ना? तो इसको देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको जो है कितना बॉर्डर रेडियस देना है, कितना पैडिंग कोडिंग देना है ना? मैं एक एनालिसिस करता हूँ। कैसे एनालिसिस? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हूँ मैं, तो सीधा इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा, बस बात खत्म। जैसे ये है, ये तुम्हारा सर्च बार है। तो ये क्या है? ये एक और डिव है। अच्छा, इस डिव के अंदर एक इनने दिया है एंकर टैग। इस एंकर टैग के अंदर एक डिव है जिसमें सर्च बार का आइकन इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में सर्च बार का इस्तेमाल हुआ है। दिस इज द एंकर टैग। सो दिस एंकर टैग शुड हैव some form of border cursor, and then it has width, padding, height, display, flex, gap,
पता है क्या, आपको ये क्लास नेम्स के बारे में क्यों पता नहीं लग रहा है? इसमें एक कंसेप्ट यूज किया गया है रिएक्ट का, वो नाम था क्या यार, पोर्टल नहीं था, एक कंसेप्ट था यार, उसमें क्या होता है ना, यूनिक क्लास नेम्स दिए जाते हैं हर एलिमेंट्स को। तो खैर, बट हाँ, इससे आप सीख सकते हो बहुत सी चीजें। फॉर एग्जाम्पल क्या सीख सकते हो ना, वेबसाइट की एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि जैसे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर कहाँ से लगा, रुको, मैं कुछ जानना चाहता हूँ इसमें, लाइक ये मॉडिफाई नहीं होता, मतलब आप कुछ भी कर दो। अच्छा, जैसे ये है, डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ये मॉडिफाई नहीं होता, पता है? आप ये कैरेक्टर्स को अगर हटा भी दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता वेबसाइट को, तो आप वैसे तो एनालिसिस नहीं कर सकते मतलब इसमें। खैर, काम की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे हमने एक ठीक ठाक सा लेआउट दे दिया है, नॉट बैड। विथ दे सकते हैं हम इसको। अब इस ये तो है ये वाला डिव, उसके बाद है सर्च बार, उसके बाद है लॉगिन बटन, उसके बाद है दूसरा बटन ना। तो इसको मुझे विथ देना पड़ेगा। चलिए विथ, पर ज़्यादा हो जाएगा 45%, तो मुझे लग रहा है। ये लो, तो थोड़ा सा कम करेंगे यहाँ पे जाके, पता है कहाँ, मैं बताता हूँ। ये लो, सर्च बार को सिलेक्ट किया हमने, ये जो विथ है ना, इसको आप ऐसे कम कर सकते हो। तो जो अच्छा लगे आंखों में वो लगा दो, 100 रुपये, 37%। तो देखते हैं क्या करते हैं। Let's give it a width of 45%. Too big or too small? Too big. Little big. I think 40% would be enough, right? So 40% सही लग रहा है, और मैं आई थिंक इसको 5 पिक्सल ही कर देता हूँ। हाँ, 8 पिक्सल बढ़िया लग रहा है, राइट? 8 पिक्सल्स look nice. Cool. Okay. Now what I need to do? I need to give the background color as well. तो अभी इतना मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं पहले। जैसे ये पैडिंग वैडिंग छोटा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ 5 पिक्सल, दिस इज लाइक 8 पिक्सल। आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब जैसे मान लो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, अब ये 8 पिक्सल लग रहा है क्या? हाँ, इतना बड़ा तो होना ही चाहिए। तो ठीक लग रहा है, ठीक है, ठीक है। 8 से थोड़ा सा ज़्यादा चाहो तो दे सकते हो, देख लेते हैं कितना आपको पसंद आ रहा है, उस हिसाब से देंगे।
9 पिक्सल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 8 पिक्सल कम लग रहा है, 9 पिक्सल देंगे और विथ देंगे और छोटा और छोटा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसमें। ये तो छोटा सा है, 35% अच्छा लगेगा, है ना? 35% एंड पैडिंग देंगे 9 पिक्सल्स का, पैडिंग देंगे 9 पिक्सल्स का और विथ देंगे 35%। अच्छा रिलेटिव विथ, सो अगर इसका जो पेरेंट का साइज छोटा हो जाता है तो इस साइज जो ये सर्च बॉक्स है इसका भी विथ जो है छोटा हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमें अंदर इसका कलर देना है, तो देखते हैं क्या करते हैं, वही कलर पिक करेंगे। So I'll again use the color picker to get the background color. The background color is this. So I'll just give it a background color of this. And you can notice the background color has also come up. Right? Now the next. ठीक है, एक बार ये कर लेते हैं। तो हम पहले इस वेबसाइट में जाके कलर पिकर को दोबारा एक्टिवेट कर लेंगे और जो बैकग्राउंड कलर है उसको हमने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने का कोई शॉर्टकट है क्या? नहीं, कॉपी हो गया होगा मुझे लगता है। बैकग्राउंड कलर, हाँ जी हो गया। हैश। ठीक है, हो गया। अब जो है ये इस इनपुट को थोड़ा सा हटाना है, देखते हैं। Step forward is okay. But I think I can remove this. Padding मैंने क्यों remove करी है, I'll tell you. So now what I'm going to do is I'm going to access the input tag inside my search bar. And what I'm going to do is I'm first of all going to give it a width of 90%. Width of 90% so that it covers, every place. Let's make it 95, right? Now I'll remove the border. How to remove the border of this input? Anyone? How to remove the border of this input? Very simple. बहुत सिंपल है. Absolutely correct, Simanshu. Border none, right? And you can see border none. So I can still see the color has not changed. So what is the background color that I'm going to give here? Any guesses? Background color that I'm going to give is going to be transparent. It's going to be transparent and I don't want any border. I hope you now understand what this background color transparent is used for, right? Then one thing that I'll be doing is I'll be giving here a padding of 0 pixels and 10 pixels. Okay. And I'll be giving this a height of maybe 20 pixels, I guess. It's too low. 30, 40 pixels. What about 40 pixels? I think 40 pixels looks well. Right? Perfect. Right? So you can see that, everything is automatically becoming very much similar to what they have created. Right? If I want, I can also give it padding in the y-axis of value 4. नहीं, 4 तो बहुत ज्यादा है. 3. ये बहुत ज्यादा लग रही है. 2 सही लग रही है. Okay, let's keep 2. Cool. Also I can make it 45 pixels. A little bigger, right? Chalo, everything is working absolutely great. Okay. तो इस इनपुट बॉक्स को हमें बड़ा करना पड़ेगा, राइट? तो एक काम करते हैं, एक बार सिलेक्टर वाला डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो क्या था वो W3 स्कूल्स, W3 स्कूल्स CSS और CSS ये बड़ा गंदा लगता है मुझे, ये जो
ऑथेंटिकेशन वगैरह ये सब बैकएंड में हो जाना चाहिए। दिमाग खराब कर देता है। ये रहा, मैं इसे देख रहा था, CSS combinator. A combinator is something that explains the relationship between selectors. We have these combinators: descendant selector, child selector, adjacent. So descendant selector का काम क्या है? Matches all the elements that are descendants of a specified element. तो ये सारे के सारे पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जो इनसाइड है div। अच्छा, तो इस div के अंदर जितने भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 2 3, अच्छा, ये हो गया तुम्हारा डिसेंडेंट। उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड सिलेक्टर सिर्फ और सिर्फ द चाइल्ड सिलेक्टर सिलेक्शन दैट आर चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफिक, जैसे डिव का जितने भी पैराग्राफ चिल्ड्रन है तो ग्रैंड चिल्ड्रन को ये सिलेक्ट नहीं करता या फिर सिबलिंग्स को नहीं करता। पैराग्राफ 1 2 और 4 होगा, है ना? ठीक है। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, चलो ये सब अभी जरूरत नहीं है, इसका भी अभी जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, सर्च बार के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है उसका हम देंगे विथ 90%। एक बार देख लेते हैं, विथ अपने हिसाब से हम लगाएंगे। तो जैसे इसके अंदर है सर्च बार, सर्च बार के अंदर तुम अपना है इनपुट फील्ड, तो इसमें अपने हमने दिया है विथ 90%। इसको बढ़ाते हैं जैसे 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 अच्छा लगे उस हिसाब से देंगे, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो ये दिखा रहा है 96, 95 बेहतर है। 95, 96 जैसे ही होता है, मतलब 97 जैसे ही होता है तो जगह खत्म हो जाता है, तो आपको तो 95 बेहतर है। तो हम देंगे विथ 95% और बॉर्डर देंगे नन। इससे जो है बॉर्डर हमारा गायब हो जाएगा, सी। लेकिन अभी भी बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे ट्रांसपेरेंट। तो एक बार हम देख लेते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ बैकग्राउंड कलर transparent. The background color transparency is properties used to make the background of an element transparent, allowing whatever is behind the element to show through. ठीक है। चलिए जी, तो ये वाइट दिख रहा है आपको, यूट्यूब में नहीं दिख रहा होगा शायद, स्क्रीन इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा, बट transparent. So what it does is it takes up the color of this thing, और फिर भी मुझे मजा इसलिए नहीं आ रहा। आई वुड लाइक टू कैप्चर इट एंटायरली, दैट्स व्हाट आई वांट, राइट? सो विथ हमने दिया है 95%, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन, आई थिंक, गिव सम पैडिंग एज वेल। पैडिंग दे देता हूँ, 10 पिक्सल्स देने से क्या होगा, मतलब अब तो ये जगह खा जाएगा बहुत ज़्यादा है। ये रहा मेरा इनपुट। तो हुआ क्या, एक बार देखते हैं। इनपुट में हमने दिया है पैडिंग 10 पिक्सल्स का।
यार एक बात समझ नहीं आ रहा है मेरे को। इनपुट एलिमेंट में पैडिंग मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऐड होता है। हैं? ऊपर देखते हैं। सी। अच्छा, दोनों साइड में हुआ है। 34 पिक्सल्स ऑन लेफ्ट। तो मतलब जो है, आई थिंक मेरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बड़ा होगा। एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा, सच कहूँ तो। मतलब हो क्या रहा है ये? अगर जैसे अभी अगर मैं इस पे देखूं, तो इसका डायमेंशन है 560 ऑफ लेंथ एंड 1000 समथिंग हाइट। ठीक है, 560 है ना। अब इसको हम बढ़ाते हैं। अब देखते हैं एक बार। अभी भी 560 ही है। व्हाट डज दिस मीन? लाइक, ओके, ओके, आई थिंक इसका करस्पॉन्डिंग तुम्हारा इनपुट एरिया छोटा तो नहीं हुआ है? लाइक, लेट मी सी वन थिंग। ये देखो। सो तुम अगर यहाँ पे क्लिक करते हो होगा तो सही, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, बट योर इनपुट हैज बीन कैप्चर्ड हियर। तो तुम चाहो तो छोटा कर सकते हो। समझ गया मैं। तो एक काम करते हैं, सर्च बार का उसको खत्म करते हैं। नहीं, नहीं पर देना पड़ेगा ना। सॉरी, इसका पैडिंग देना पड़ेगा। पैडिंग, ठीक है। बट जो ये इनपुट टाइप है, इसमें भी तो थोड़ा सा पैडिंग कम करना पड़ेगा। 4 पिक्सल्स का पैडिंग देते हैं, थोड़ा सा और। पता है इसके ऊपर मार्जिन ज्यादा है, जो मेरा ये वेबसाइट है। चलो कर लेंगे। ठीक है। पैडिंग चाहे तो 4 की जगह 5 पिक्सल भी दे सकते हैं। 5 पिक्सल देते हैं। पैडिंग 5 पिक्सल। मेरे टांगों में फिर से दर्द हो रहा है, वो कल मुंह आया था ना। बड़ी गंदी बीमारी है ये मूंछ आना। मतलब बीमारी तो क्या है, एक्सीडेंट है। बड़ा ध्यान से चलना होता है। आप लोग भी ध्यान से चलिए। Ensure that you don't get any sprains in your muscles. It's really, really painful, and yeah, I mean, you suffer a lot. He has given a height of 40 pixels. Is it required to give a height of 40 pixels? Height of 40 pixels. Let's see.
I mean, I don't think it requires a height. Like, like you can give. I mean, the input area would essentially increase. I think. Yeah. See. Yeah. Okay. Height of 40 pixels is good. All right. Two say clear. Okay, let's keep two. Cool. Um, Also I can make it 45 pixels. A little bigger, right? Chalo, everything is working absolutely. Let me drink some water. Great. Okay. Now all we need to do is design these login and my card icons. Okay. So we'll use Bootstrap to create the login icon. Right. So in order to create the login icon, all I need to do is write BBTN and automatically it looks somewhat like this. You can also write FS2 here. Make the text bigger. No. FS4. No, FS5. Right. Okay, I think this is equivalent to this. Right? Hmm. Next, this. So here, BTN, success, right? If you remember BTN, success will create a green colored theme, right? And you can see that it looks almost similar. It just requires a little bit of padding. So maybe PY3. So, okay. Mm, this button should be given a class of btn. So what it would do is it would create a button like without any kind of borders and things, just like this. So let me look at the documentation once. This would, like, where is the button? Button. Bootstraps, custom button styles, options, and styles. Bootstrap is a base. Basic styles such as padding, content alignment, by default built-in has transparent border and background color and lack any explicit focus and hover styles. Just like this, it does not. It lacks any explicit focus and hover styles. So just like that, this is what is exactly is happening. But I need the you know size of the text to be larger. So for that, what I can do is I can like tell font size. So quickly change the font size of the text with our heading classes sample h1 to h6. So you can like give the font size fs4. Let me give the size fs4. So what would happen is this, like, okay, all right. uh is fs4 good? Kind of, yeah. Yeah, it's good. As a little colored. If you remember here, BTN, success, right? Hmm. If you remember BTN, success will create a green colored theme, right? And you can see that it looks almost similar. It just requires a little bit of padding. So maybe PY3, PY3.
px2 maybe. px3. Okay, now let's write here p dash 3. Cool. And I think that we had done, right? Just like that, we are done with the first section of our page, which is the navbar, right? And you can see that we have created. So now I need to edit the this thing, my card button. Here you need to give a class of button. So what it does is, after you have given a button, you have to write success, success, and I think I would need some padding. Yes, it would need some padding of 3, maybe. Let's see. Yeah, it's good. Like it's not exactly the same. Like you can definitely you know change this thing. You can like these changes are not applied immediately. All right. No, 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 no. I'm not able to exactly replicate what's happening because this spacing needs to increase and the thing this. So I need to change that as well. It's such a good number, right? Pretty cool. Hmm? Yeah, color थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, of course so on. It's a clone, yeah, it's a clone. Of course, if I want to give the same color, I can use color picker and write it using CSS. But we'll be using Bootstrap as much as we can. हाँ मतलब समझ रहे हो ना that we can use more things. Maybe I can add rounded 3 here to add more roundedness, right? But yeah, that is all I think for now. If you want the exact same thing, you can write custom CSS. Cool. So just like that, we are done with the first section of our page, which is the navbar. This is the second section. So guys, this is the little lame section again. So we thought that this is going to be something that we are going to create on our own, right? Yes or no? ये वाला जो section है, everybody thought that we are going to create this on our own. We are going to add an icon. We are going to add a text, an image, a button, and a div with rounded borders, right? Yes or no? But actually, the clever front-end developer of Blinkit has created it nothing but a image. So what I can do is I can simply copy this element. What the what the hell, bro? Like I need to edit this stuff. Like this button, I need the spacing a little bit more. So how do I do that? So inside the button, I'd like to target the I element, right? So I can do something like um, if I get some other buttons, then in that case, it might create some problem. Like if I, you know, do something like that. Instead, what I can do is I can make it. Like I want to do something. Like, what if I do certain modifications in the button? Like I have observed one thing in myself. Like I'd like to highlight it. When I am using my brain to do something, at that time I don't feel sleepy. I mean sluggish.
But when I am just randomly watching videos, in that case, I feel so much sleepy and sluggish. I don't get the energy to study. So what I would like to highlight is that like the more interest you put in whatever you are doing, the more active and energized you would feel. Sometimes even I feel so sick, and now I'm realizing that I felt sick previously because I was not interested in whatever I was studying. So the most important thing is you should be really interested in whatever you are studying. That's the most important thing. Otherwise, you would feel sick, you would feel sleepy while studying, you would feel weak while, doing these things. Right now, I'm using my mind, my sleep is all gone, and I'm just thinking what I'm going to be doing next. इसके बाद क्या करना है, इसके लाइक इसमें क्या स्टाइल्स ऐड करने हैं, ये सब मैं सोच रहा हूँ. सो that's something that really helps according to me. खैर, काम की अगर बात करें तो कुछ ऐसा इसको टारगेट करता है, ठीक है, अलग से. जो ये एफ ए कार्ड शॉपिंग है ना, ये क्लास नेम है, तो हम इसको ऐसे मतलब टारगेट कर सकते हैं, कंट्रोल सी करके ये क्लास नेम से इसे टारगेट कर सकते हैं, डॉट कंट्रोल वी. और इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, मार्जिन देंगे, मार्जिन ऑफ लेट से 2 पिक्सल्स, और अपने हिसाब से अब उसमें बढ़ाएंगे इंस्पेक्ट में. ठीक है, देखेंगे जो आंखों में अच्छा लगे वही करेंगे. तो जैसे ये है हमारे पास, इसमें मैंने मार्जिन अपने हिसाब से दिया है, तो मैं इसमें और मार्जिन दे सकता हूँ चाहूँ तो. ये देखो, तो इसमें ना मार्जिन ऊपर नीचे कुछ नहीं देना है. एक बार देख लेते हैं. इसके ऊपर नीचे हम कुछ नहीं देंगे मार्जिन, बस जो है लेफ्ट राइट में देंगे. ऊपर नीचे देंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जरा सा देंगे. ऊपर नीचे हम देंगे, वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो ऊपर नीचे जरूरत ही नहीं है, ऊपर नीचे जीरो रहेगा, और लेफ्ट राइट में कुछ मार्जिन देंगे हम इसमें. तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल बी राइटिंग 0 पिक्सल्स एंड 2 पिक्सल्स. सो इससे क्या होगा, सिर्फ जो है लेफ्ट राइट में मार्जिन ऐड हुआ. ये देखो, ये देखो, एक बार देख लेते हैं, मिला लेते हैं, और थोड़ा सा चाहिए होगा ना. और इसका कार्ड का शेप एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ, बट चलिए खैर ठीक है. हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते चाहे तो. ओके, मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ. मार्जिन मार्जिन और थोड़ा सा देंगे. एग्जैक्ट क्लोन बनाना है ना. 11, 12, 13, 13 ठीक है, ठीक है. 12 रखते हैं, और ऊपर नीचे एक, ठीक है, एक, और इतने देंगे 12. और इसका फॉन्ट साइज देंगे मान लो 10 पिक्सल्स. फॉन्ट साइज हम दे सकते हैं आइकन्स का जितना मुझे पता है. इसको बढ़ाएंगे अपने हिसाब से, मतलब देखो ये आर्बिटरी है, ठीक है, तुम अपने आइडिया के हिसाब से बढ़ा सकते हो. जैसे इसमें लग रहा है कि ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है इससे, और इसमें तुम वो कर रहे हो तो एक इफेक्ट सा भी आ रहा है, देखो. खैर, वो इफेक्ट हम नहीं डालेंगे, ये थोड़ा सा ट्रांजिशन वगैरह 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 लगेगा इसमें, तो इफेक्ट तो नहीं लगाएंगे. बट हाँ, ये जो साइज है, ये टेक्स्ट से ये साइज बड़ा लग रहा है, तो इसको हम बनाएंगे. तो अभी ठीक लग रहा है ना, 20 पिक्सल फॉन्ट साइज में. थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नहीं 20 पिक्सल है, ठीक है, 20 पिक्सल फॉन्ट साइज. ये लो, 20 पिक्सल हमने दे दिया फॉन्ट साइज. अब जो है बटन के अंदर का जो डेटा है, इसका भी हम फॉन्ट साइज बढ़ाना है. माई स्पेस कार्ट है, ठीक है, माई स्पेस कार्ट. तो इसमें एक स्पेस भी दे दो, बेहतर रहेगा. अब देखो जरा, माई स्पेस कार्ट, ठीक है. कलर एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ, मतलब इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन सा है, इसका इतना नहीं है, बट चलो ठीक है.
और इसका जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा मुझे बोल्ड लग रहा है, तो मैं बोल्ड भी कर दूंगा, रुको। ठीक है। अब जो है इसके अंदर मैं दे सकता हूँ फॉन्ट वेट, राइट। फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड देते ही मेरा जो कार्ड का टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड बन जाएगा। इसके जैसा ही बना है, ठीक है ना। अब कितना देंगे, और ये वाला जीरो तो देता हूँ, इतना जीरो ही अच्छा है। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा देख के। और ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पता है ये स्पेसिंग आप देखोगे, पता नहीं क्यों इसका मुझे थोड़ा सा अलग सा लुक आ रहा है और इसका अलग सा लुक आ रहा है। ये देखो, ये जो ऊपर का एरिया कुछ ज्यादा है, ऊपर नीचे दोनों में एरिया ज्यादा है। मतलब जो ये बॉक्स है अपना, जो ये डिव है ना, मैं बताता हूँ आपको। ये डिव नहीं, जो ये नेव है ना, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अलाइन आइटम्स है, इससे क्या होता है चीजें अलाइन हो गया। जस्टिफाई कंटेंट से चीजें जस्टिफाई हो गया। बॉर्डर बॉटम, पता है क्या, नेव को हम बॉर्डर तो दे दिया हमने, बट इसके अलावा भी थोड़ा सा साइजिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते देखते हैं क्या मतलब लगाया जा सकता है। हाइट, बार साइजिंग, you can set a height value on the dot progress container. बूटस्ट्रैप के मदद से अगर आप हाइट देना चाहते हो तो दे सकते हो। हाइट 25 ऐसे, तो इससे आपका हाइट इतना तो नहीं चाहिए, और चाहिए मेरे को ना। 25 से नहीं होगा, 50। यार पता है क्या प्रॉब्लम है, बूटस्ट्रैप में आपके पास ऑप्शंस कम है। अब 25 के बाद सीधा 50, अब 50% हाइट थोड़ी देंगे। एंड दैट टू ऑफ बॉडी। सो ना 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 ना, इसको ना पिक्सल में देना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं दे सकते। एक काम करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस में नैव देते हैं, हाइट देंगे हम 100 पिक्सल्स।
एक बार देख लेते हैं, फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ये है अपना वेबसाइट, और ये भी 100 पिक्सल ही लग रहा है मुझे को, है ना? देख लो एक बार। एक बार हाँ, यार इसका नापे भी तो कैसे नाप, यहाँ पे है इसका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सा और हाइट चाहिए, तो हम पता नहीं, बड़ा ही अजीब तरीका है ये वेबसाइट बनाने का। हाथ से मैं नाप रहा हूँ, लाइक कहा गया नैव, हाँ जी, नैव में हमें हाइट बढ़ाना है बस 108 पिक्सल्स। बट दिस इज नॉट अ गुड वे, आई नो, बट अब क्या करें। चलो थोड़ा सा कम ही रखते हैं, 6 पिक्सल डालते हैं, ठीक है। आई नो दैट दिस इज नॉट अ गुड वे, बट जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा, वैसे वैसे डेवलपमेंट स्टाइल भी बेहतर होता जाएगा। इस हाइट को लंबा करना पड़ेगा, और कितना लंबा करना पड़ेगा। स्क्रीन भी थोड़ा थोड़ा गंदा हो रखा है। कितना है? 104 पिक्सल्स, ठीक है। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 104 पिक्सल। 104 पिक्सल्स, इससे क्या हुआ पता है? इससे जो है हमारा जो नेफ बार है ना, इसका जो साइज है, इसका साइज है, ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए, लाइक अच्छा लग रहा है देख के। और थोड़ा सा इसमें इस बटन का जो है, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही इसमें पैडिंग दे दिया है। थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा पैडिंग, और जो है इंटरनल पैडिंग मुझे देना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए देते हैं। तो आज छोड़ो, ये इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक ही लग रहा है ना? काम चलाओ। काम चलाओ है, सस्ता और टिकाऊ है। तो अपना नैव बार है, और आप अगर इंडिविजुअल डिव्स को देखोगे, जैसे ये एंकर टैग है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगला सेक्शन बनाना है, दैट इज कि मैं थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ, ठीक है। पानी खत्म हो गया, ये देखिए। 2 मिनट रुकिए, मैं पानी लेके आता हूँ। देखता हूँ अभी तक किसी ने मुझे देखा है या नहीं। चलो, किसी ने नहीं देखा।
मैं फिर से आ गया। एक्चुअली हमारा जो आरओ है ना, वो उससे पानी बड़ा धीमे-धीमे रफ्तार से आता है, मतलब अच्छे से नहीं आता है पानी। खैर, ओ, ये क्या हो गया? अच्छा, ये बटन से। अच्छा, कैंसल। And I can simply edit here. Developer of no, and a div with rounded borders, right? Yes or no? But actually, the clever front-end developer of Blinkit has created it nothing but a image. So what I can do is I can simply copy this element and I can simply edit here. And you can see that it is. Now, if I want to give it in the center, all I do is write m dash auto. It will automatically come in the center. Okay, no, wait. I'll add t dash flex and justify content center. Also, yeah, the space is also fine. एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हम्म मेरे लिए नहीं था ये मैसेज, मैं डर गया था। अरे हमारे कॉलेज के इतने नखरे हैं ना, ये कह रहा है कि एक फॉर्म फिल करो, मैंने कर दिया है, तो फिर भी उसमें नाम था, बट खैर बाद में मतलब वो नहीं था मेरा नाम। Fine only in between. So two elements created, right? Cool. Okay. So let's create another section. So I'm calling this as categories section. Categories section. Okay. So I'm skipping this section for now. Okay. I'm just creating this section. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हम ब्रेक के बाद पिक करेंगे because this is basically a scrollable div. How to explain this? So yeah, I am unable to show you, but this is supposed to be a scrollable div. Okay, so in order to understand what is a scrollable div, you need to understand certain concept which I'll tell after the break. पहले वो बना लेते हैं, ठीक है, डिव के अंदर जो ये इमेज वाला सर ने बताया ना, तो व्हाट द हेल यार,
इंस्पेक्ट। तो ये था, ये रहा इमेज, है ना। इसको मारते कॉपी, कॉपी एलिमेंट, एंड ये जो है एक डिव के अंदर है, ठीक है। ऑल राइट, इस वेलकम स्क्रीन को बंद करते हैं। तो आप देख सकोगे कि जो है हमारा इमेज ऐड हो चुका है, बट जो है हमारा इमेज का जो साइज है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम उसको चेंज करेंगे साइज को। क्लास देके डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो इमेज है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। स्टिल इसका साइज मुझे मज़ा नहीं आ रहा है देख के, मतलब सर ने चेंज नहीं किया। So, yes, so I'm skipping. So I'll add a t dash flex and justify content center. Also, yeah, the space is also fine only in between. So two elements created, right? Cool. Okay. So let's create another section. So I'm calling this as categories section. Categories section. Okay. So I'm skipping this section for now. Okay. I'm just creating this section. Okay. ये वाला जो part, इस इमेज का साइज सर ने चेंज नहीं किया है, लाइक आई एम नॉट, मज़ा नहीं आया मुझे। अब मैं इसको चेंज करूँगा। तो जो अपना इमेज है, विड्थ और हाइट इसने दे रखा है, मैं इसको ऐसे नहीं दूंगा, ठीक है। और तो जैसे ही मैंने विड्थ और हाइट हटाया तो क्या हुआ, ये देखो ऐसा कुछ हुआ, मतलब इमेज बहुत बड़ा सा हो गया। इसको ठीक करना पड़ेगा पहले, लेकिन सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट फिट क्या प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इमेज में इनलाइन स्टाइलिंग दे रखा है, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट फिट फिल। तो मैं इसको कॉपी मार, सॉरी, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करके सीधा चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज दिस। What kind of property is this? In CSS property, object fit is a CSS property that specifies how an image element should be resized to fit the container while preserving its aspect ratio without changing its intrinsic dimensions. Here's what fill. When you set object fit to fill, the content will be resized to completely fill the container both horizontally and vertically. This might cause the content to cropped if the aspect ratio of the container differs from the aspect ratio of the content. Aspect ratio preservation. Despite filling the container, the aspect ratio of the content is preserved. In other words, the content will not be stretched or distorted. Object fit fill up जब देते हो तो aspect ratio preserve होता है, which means that the image won't be stretched or distorted. All right. If the content's aspect ratio does not match the container's aspect ratio, parts of the content might overflow the container and the overflowing parts would be hidden. This is because object fit fill prioritizes filling the container over maintaining the entire content visible.
All right. So yeah, it's a good feature. Now I have to give the size like of the image. So how do I do this? Image source क्लास दे देता हूँ एक क्या ट्रिक इमेज मतलब ऐसे ही चलो नाम दे दिया मैंने जो दिल में आया ट्रिक इमेज ट्रिक इमेज हाइट देता हूँ 200 पिक्सल्स और विड्थ दूंगा मैं 90 व्यू पोर्ट एक बार देख लेता हूँ कैसा बना है तो इमेज मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुआ है लाइक ये देखो है ना तो इसको मैं बढ़ाऊंगा अभी दिखाता हूँ तो this is the div and inside the div I have the image. Okay, so here I have given a height of this could be increased further. How much मैं देख लेता हूँ कितना अच्छा खासा दे रखा है तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा है ना देखते हैं कितना बढ़ाना है एक बार इसमें इंस्ट्रक्ट मार के देख लेते हैं इमेज है इमेज को हमने सिलेक्ट किया है बॉर्डर स्टाइल नन कर्सर डिफॉल्ट विड्थ है 1280 पिक्सल्स विथ हटाओ विथ चलो हो जाएगा हाइट है 234 234 ओके हाइट है 234 ऑल राइट एक बार बॉक्स मॉडल देख लेते हैं 234 है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पे तो मैंने बहुत दे दिया इसको थोड़ा सा कम करते हैं पर पता है क्या आई मीन 234 अगर है इसके जैसा क्यों नहीं लग रहा है कुछ ये तो बड़ा सा लग रहा है अच्छा इसमें पैडिंग वैडिंग होगा ये बड़ा सा लग रहा है देखो कितना बड़ा लग रहा है तो मुझे हाइट बढ़ाना पड़ेगा 100 व्यू पोर्ट विथ है ना 1500 पिक्सल इसका कितना है 1280 यही मुझे समझ नहीं आ रहा ये दे रहा है 1280 बाई 234 ठीक है तो मैं भी वही करना चाहता हूँ बट हाइट कुछ तो लफड़ा है यार मतलब क्यों नहीं हो रहा है मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है ये इनका लोचा कोई पैडिंग वैडिंग दे रखा है क्या इमेज में 100 व्यू पोर्ट विथ इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं मतलब उस लुक को अचीव करने के लिए ऐसे ही होगा और क्या है ना ये देखो कितना बड़ा लग रहा है अब कह रहा है कि इसका हाइट जो है ना तो बॉर्डर है ना तो पैडिंग है कुछ नहीं है इसका अभी हाइट दे रखा है इतना 1280 बाई 234 तो जब मैं इसमें 1280 बाई 234 देता हूँ तो कुछ और आ रहा है आई फील
there is an issue. I mean, क्या issue है? Something, there is something wrong which I'm not able to figure out. Where are you? Hmm, इमेज भी बड़ा है ना, थोड़ा सा ठीक है. कितना है? 278/100 विल विद. चलो इतना देते हैं. 278/100 विल. एक मिनट, ठीक है माँ. ठीक है, इतना काफी है. वैसे ये लिंक आप इसमें क्लिक करोगे तो कुछ आ जाता है, बट मेरे केस में नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ सिंपल इमेज. ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया. ऑलराइटी. है ये हम ब्रेक के बाद पिक करेंगे because this is basically a scrollable div. And how to explain this? So yeah, I am unable to show you, but this is supposed to be a scrollable div. Okay, so in order to understand what is a scrollable div, you need to understand certain concept which I'll tell after the break. Okay, so easy wala part kar lete hain, which is this. Okay, so again guys, this is also an image, right? So what I can do is I can simply copy this image and I can create multiple such. Right, so I've created such images and you this category section, this category section need to be in the center, right? So first of all, let's give it a width of only 85% so that it is somewhat smaller, and then I'll give it a margin auto so that it automatically comes in the center of the screen. And if 85 center and a div with rounded borders, right? Chalo, everything is working absolutely great. Okay, now all we need to do is design these login and micro icon. Oh, flex wrap is also needed to be added. So okay, so let's create another section. So I'm calling this as category section. Categories section. Okay, so I'm skipping this section for now. Okay, I'm just creating this section. Okay, ये वाला जो part है ये हम break के बाद pick करेंगे because this is basically a scrollable div. How to explain this? So yeah, I am unable to show you, but this is supposed to be a scrollable div. Okay, so in order to understand what is a scrollable div, you need to understand certain concept which I'll tell after the break. Okay, so easy wala part kar lete hain, which is this. Okay, so again guys, this is also an image, right? So what I can do is I can simply copy this image and I can
create multiple such images, right? So I've created such images, and this category section, right? This category section need to be in the center, right? So first of all, let's give it a width of only 85%, so that it is somewhat smaller, and then I'll give it a margin auto, so that it automatically comes in the center of the screen. And if 85%, okay, let me create a border to understand how big the element is. Pixel solid black. Yeah, so it's perfect only. It's perfect only, right? Yes. I think I need to add one more image. Right. Yes, one more image added. Now the class that I'm going to give here is I'm going to give here dflex and justify content around. Oh, flex wrap is also needed to be added. So I'll just add flex wrap. And you can see that another section has been created. Instead of around, I can also use between. No, but I'll use around only, but it's fine. And you can see that we have created 3 sections of our page, right? Mm-hmm. Right? 3 sections already created. So 3 sections have been created. Now only a little bit of, so see, this is one of the sections. Okay, this is one of the sections. Okay, which we'll be making, and then we have this footer. So we have in total of 3 sections pending. We have made 3 sections. We have 3 more sections to make. Okay, let's make this after the break. Yes, correct, absolutely correct. Yeah, you can add that. So let's take a break, and then afterwards we'll understand how we can build this, this, and this. Cool. Okay, guys, let's take a break. तो हमें जो है ये सेक्शन बनाना है, राइट? तो if I click on this, this is an image, and what I can do is this is an image inside a div, right? Like I want to select only the image elements. How do I do that? Here, I'm going to create a div. Here I'm going to paste it. So with that, I will say this thing. Oh, this is to give some. So now here I'm going to be giving a class of
categories, and here width of 85% and margin of auto. What it would do is it would give us a width of 85% and a margin of auto. Now I have to give few classes on this thing, display flex, and yeah, so display flex justify content around flex wrap. So here display flex justify content around. So what it does is it fundamentally creates this thing. I would like to add the property flex wrap, so so that the items don't overflow. Wrap. इससे क्या होगा, इससे सारा का सारा रैप हो जाएगा and we are good to go. So tell us about, I would like to know more about the flex wrap property. Flex wrap प्रॉपर्टी। लैपटॉप मेरा गर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है ब्लास्ट हो जाएगा। ओहो हो, बहुत गर्म हो चुका है। आई थिंक आई नीड टू क्लोज द लाइव स्ट्रीम। यार मेरा लैपटॉप इतना गर्म हो चुका है ना। खैर, the flex wrap property in CSS is used in conjunction with the display flex property to control whether flex items are forced into a single line or can be wrapped onto multiple lines within a flex container. It specifies wrapping behavior of flex items. ठीक है। No wrap. This is a default initial value. Flex items are displayed in a single line, which can cause flex container to overflow its container if the combined with other flex items exceeds the container width. Wrap. Flex items display in multiple line if they cannot fit in a single line. The overflow direction depends on the flex direction. Wrap reverse. All right. तो हमने जो है यहाँ पे रैप कर दिया है, ठीक है। तो अच्छी बात है। दो चार इनको मिटाते हैं। डिलीट। ठीक है, तो अब देखते हैं। फिर भी एक से ज़्यादा है। दो को मिटाऊंगा मैं अब। डिलीट डिलीट। थोड़ा सा स्पेशियस होना चाहिए ना, ऐसे कंजेस्टेड लग रहा है। एक और, इसमें स्पेस ज़्यादा है, इसमें स्पेस कम है, मतलब इसमें स्पेस और बढ़ गया, राइट। सो ऐसे ही ठीक है, बराबर स्पेसिंग है और ठीक लग रहा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो है मैंने इसका जो विद दिया है, वो दिया है मैंने 85% और मार्जिन दे रखा है ऑटो, ताकि जो है सेंटर में आ जाए। मुझे क्या करना है बताएं, बॉडी में जाना है और इसमें जाना है, तो और इसमें जाके इसको बढ़ाना है। और
90% कर देते हैं ना, 90% अच्छा लगेगा। इसमें तो पूरा है, इसमें 90% कर देते हैं, अच्छा लगेगा। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी से सारा जो आइटम्स है वो रैप हो जाता है। मार्जिन ऑटो से डिव्स सेंटर में आ जाता है। अभी तक सर ने जो है इतना ही कराया है। use around only, but it's fine. You can see that we have created three have been created. Now only a little bit of, so see, this is one of the sections. Okay, this is one of the sections. Okay, which we'll be making, and then we have this footer. So we have in total of 3 sections pending. We have made 3 sections. We have 3 more sections to make. Okay, let's make this after the break. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो है मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, मतलब क्या ही बताऊँ। तो मैं स्ट्रीम को बंद कर रहा हूँ, अभी और करूँगा। अभी तो 5 बज रहे हैं, सो अराउंड 1 बजे तक मैं कोडिंग करूँगा, उसके बाद ही उठूँगा। बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप मेरे पास एक ही है और मैं नहीं चाहता कि ये ख़राब हो जाए। तो 1.5 घंटे का लाइव स्ट्रीम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो विद दैट बीइंग सेड, सी यू। एंड अगर आज मुझे मन हुआ शाम को, मैं क्या पता रिकॉर्ड करूँ। बट यस, सी यू एंड हैव अ गुड डे, हैव अ गुड एंड प्रोडक्टिव डे। या, सो आई एम एंडिंग इट।